तो अपूर्व भाई, टेल अस अ बिट अबाउट द चैनल। आपने कैसे स्टार्ट किया, मतलब हाउ डिड द आइडिया कम अलोंग? अभी तो खैर स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब ऑब्वियसली आई एडिट दिस पोर्शन आउट पॉडकास्ट में से, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आस्किंग कैसा रहा, मतलब हाउ डिड इट स्टार्ट एंड ऑल, ताकि वी हैव अ बिट ऑफ प्रीटेक्स्ट। या तो लाइक लॉकडाउन का टाइम था, 2020 की बात है। अच्छा तो अच्छा। आई वाज, मतलब मेरे को क्या लगता था, आई हैड टू फॉलो अ लॉट ऑफ प्लेसेस। मतलब 100 जर्नलिस्ट फॉलो करना, उनकी अंधी नोटिफिकेशंस आती रहती थी मेरे पास। हम्म, कई पेजेस की नोटिफिकेशंस ऑन है, क्या कहते हैं। तो मेरे मेरे पास 100 सोर्सेस थे इन्फॉर्मेशन के। आर्सेनल की नॉलेज रखता था मैं हर हालत में। मतलब हम्म, भाई छोड़ो, मेरा खानदान जानता है मेरा और मेरा आर्सेनल का प्यार। हम्म, तो मतलब तो what my I hope it looks less idea washroom now. was to have a single place, मतलब मैं सोचा यार ये कई लोग भी करते हैं, अरे यार अच्छा। हम भी फॉलो करते हैं कई लोग। सो आई वांटेड कि हाँ एक ऐसी जगह हो जहाँ पे ट्रस्टेड सोर्स हो, जहाँ पे सारी न्यूज़ें मिले। और अच्छा। मेरा मन था, क्योंकि न्यूज़ फेंकने वाले 100 पेज हैं। मतलब दे पुट आउट न्यूज़ फ्रॉम टायर 1000 टू टायर 1 हाँ ठीक सोर्स है। के। Yeah, मतलब वो भी न्यूज़ फेंक रहे होते कि हम एम्बाप्पे टू आर्सेनल। मैंने कहा अरे कुछ भी, correct. हाँ राइट। कल आके बोलोगे But सुनील guys, छेत्री आर्सेनल के लिए साइन कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा। मतलब yeah, तो मतलब absolutely. लाइक यार एक कम्युनिटी में। और मेरा आइडिया क्या था, दे डिडंट यूज टू इवन आंसर द डीएम्स या कुछ भी रिप्लाई करो, कुछ कमेंट करो, कुछ नहीं होता था। तो मेरा आइडिया था कम्युनिटी बिल्ड करने का, कि अच्छा यार एक fair enough। लाइक माइंडेड आर्सेनल फैंस Yeah. हो, जिनके साथ एक आप हेल्दी डिस्कशन कर सकते हो, बात कर सकते हो, उनके साथ चीजें शेयर कर सकते हो। कि हाँ ठीक है। एक अगर मेरी कुछ रेडिकल ओपिनियन है तो मैं किसी के साथ शेयर कर पा रहा हूँ। सही है। आया तो मेरे अपूर्व पास भाई, कोई हम और ना था नहीं। अपूर्व भाई, हम पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं फिर। लेट्स जस्ट स्टार्ट द पॉडकास्ट, फिर उस पर शेयर करते हैं। मुझे थोड़ा प्रोटेस्ट चाहिए था, I'll ताकि वी just हैव समथिंग टू टॉक अबाउट। briefly, I'll just take through the. Briefly, I'll just take you through the flow. हम क्या शुरुआत में बात करेंगे about आर्सेनल के सीजन के दो first योर स्क्रीन reactions, इजंट मूविंग, दो योर then the स्क्रीन इजंट progress मूविंग। that they have made. अब ठीक है। हाँ फ्रीज हो रही थी दो ही चीज। हाँ ठीक है, अब ठीक है, हाँ मच बेटर। बट ये अगेन अटक रही लाइक है, इट्स अटक रही है यार दो ही। नेटवर्क खराब आ रहा है, गेट खोलना हाँ पड़ेगा। अटक रही है क्या बहुत दो ही के ज्यादा? साथ दिस द पहले फर्स्ट वाली टाइम। जगह में बेटर हाँ आ रही थी. पहले बेटर आ हाँ रहा था। हाँ दो ही वही रख पहले लिया। बेटर आ रहा था नेट। एंड आई थिंक वो एस्थेटिक भी सही लग रहा था। वो तो मजाक में कह रहे थे हम लोग, पर अरे एस्थेटिक नहीं बेटर नहीं, था। हाँ हाँ वो सही था यार, हाँ ऐसा कुछ बात नहीं, हाँ। वरना तो कुछ भी इट वाज बैकग्राउंड एक्चुअली सेट कर लुकिंग सकते हो गुड। यार। हाँ Okay, wait a second. I'll just switch and come. Sorry, मेरे रूम अपूर्व का भाई, आज ही मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ. अरे कोई नहीं यार, चिल। हाँ हाँ। ये सब चलता रहता है यार, कोई Yes. इसकी कोई टेंशन नहीं, सही है। सो अपूर्व भाई, शुड वी कीप इट इन इंग्लिश और हिंदी, लाइक व्हाटएवर आप क्या प्रेफर करोगे जब हम लोग पॉडकास्ट करें तो? नहीं। यार जो आप प्रेफर करें, मतलब कंफर्टेबल दोनों में हूँ, बट हाँ मैं इंग्लिश हिंदी, कंफर्टेबल दोनों में इंग्लिश हूँ। इंग्लिश में हाँ रख लेंगे, दोनों, थोड़ा इंग्लिश में लोग। ओके, फाइन विद इट। Yeah, I think यहाँ से बेटर आ रहा है, मेरे को भी हाँ लग रहा है. बट अब जब से अपूर्व भाई ठीक। ने बोल दिया ना, अब मेरे नहीं नहीं दिमाग से नहीं, बात ही मजाक नहीं कर जा रहे रही थे यार। अरे नहीं यार मैं यार, मजाक कर रहा नहीं यार था, मैं यार, मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे हो नहीं यार। नहीं, of course, but मैं yeah, बस so मजाक कर रहा था। मेरे को Actually, on a serious note, the आज अपना background looks pretty good. थ्रू दी पॉडकास्ट आवाज आ रही, होपफुली मेरी अगर हाँ आ रही है, बढ़िया आ रही है, ठीक है। आ रही है ना, हाँ तो पिक्चर अपूर्व भाई अटक रही है विल थोड़ी। स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग कि पिक्चर, हाँ इज द बेस्ट वी कैन डू टुडे. आज का नेट का बहुत ही सीन है यहाँ पे. विल जस्ट से कि नहीं नहीं, सही है। विल स्टार्ट ऑफ बाय आस्किंग यू आर्सेनल का सीजन, देन क्या प्रोग्रेस बना है, ये सब एज एज जनरल. पहले प्लेयर्स के बारे में बात करना, अदर देन मार्टिन ओडिगार्ड. फिर हम आर्टेटा के बारे में बात कर सकते हैं, कोच, मैनेजर, पहले मैन सिटी में असिस्टेंट मैनेजर था. देन वी स्पीक अबाउट मार्टिन ओडिगार्ड, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर सकते हैं.
फिर इंजरीज ने कैसे आर्सेनल को थोड़ा ऊपर नीच किया है वो, एंड देन लास्टली वी कैन स्पीक आउट आर्सेनल को नेक्स्ट सीजन में आपको कैसे लगता है कि मतलब व्हाट्स द चांसेस नेक्स्ट सीजन, एंड जस्ट आई फील नेक्स्ट सीजन के बारे में अभी बात करते नहीं, लेट्स कीप इट मोर अबाउट द करंट सीजन एंड प्रोबब्ली जस्ट अ ब्रीफ अबाउट हाउ डू थिंक आर्सेनल कैन परफॉर्म, मतलब बहुत ही ब्रीफ में, बिकॉज करंटली आर्सेनल फैंस का करंट सीजन को लेके बहुत ज्यादा इमोशंस आ रहे हैं, सो दैट्स नहीं, अबाउट इट, हल्का सा इट ब्रीफ अराउंड में 8 या 9। नेक्स्ट सीजन का क्या हाँ एक्सपेक्टेशन है तो वो एंड में डाल देंगे। ठीक है, 8, ओके ठीक है हम क्या ठीक 8 या 9th मिनट में स्टार्ट करेंगे एंड लेट्स फिनिश इट बाय 30-35 मिनट्स, मतलब टोटल ओके सेगमेंट, हाँ जब से हम शुरू हाँ करेंगे 30 minutes from now, ठीक है 35 minutes from now. ठीक है Okay. पर And Anukar sir, today अगर internet goes up and down, you'll have to play it around, okay? नो वरीज नो वरीज नो नहीं तो अगर Okay. इफ यू आर कंफर्टेबल हम कल रिकॉर्ड कर सकते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम। नहीं इसको नहीं कल ठीक है, कोलकाता कल जाना है। कल तो हाँ कल मैं कोलकाता जा रहा हूँ, फिर मैं तो वापस इज आऊंगा गोइंग एक हफ्ते बाद हाँ और हाँ प्लस अपूर्व भाई आपको तो हम काफी टाइम से चाहते थे पॉडकास्ट में, so I wouldn't want to delay it. हाँ अरे नहीं, इट्स ओके। यू आर लाइक अ मार्की गेस्ट, जैसे आर्सेनल में ओझिल जब आया था उस सीजन, तो यू आर लाइक अ मार्की गेस्ट तो हमारा वो Absolutely. तो शुरू करें? हमारी समर ट्रांसफर विंडो में पहले एक्विजिशन हुआ पर ठीक Exactly. है। अरे नहीं Absolutely. काफी फन होने वाला है ये एपिसोड, पता है हाँ मुझे। So okay, let's start. Okay, 3, 2, 1. Hello and welcome everyone to episode number 51. Today we have with us Apurv Gupta here at the Indie Football Podcast. अगर हमारे एपिसोड नंबर 50 में थॉमस ग्रोनमार्क ने आके जैसे बोलते हैं ना चार चांद लगा दिया हो, तो वी आर वेरी प्राउडली वी कैन से दिस अनुकर्ष भाई कि हमने वो लेवल मेंटेन करने की पूरी कोशिश की है। साइलेंट Absolutely. गूनर इंस्टाग्राम में क्या फेमस बंदा है, एंड टू हैव हिम इन आवर पॉडकास्ट अनुकर्ष सर, इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस। I mean, yeah, definitely. Apurv bhai, he is so much fun, and I think Silent Gunnar वैसे Instagram पे he doesn't speak like his own views ज़्यादा, but I think Apurv bhai as a person is so much of fun, and like the work he has done. Usually क्या होता है कि हम किसी 2000 followers वाले इंसान से ही बात करते थे पहले, when we were small 300 followers के around, तब भी वो है कि नहीं ये paid होगा ये होगा वो होगा, but what I really like about Apurv bhai is he was very nice enough to help us, and you know, as soon as you talk to him, you get the vibe of a friend, not someone who is, resting on his laurels. And that's one of the reasons I am really happy that we have got Apurv Bhai on the show. Someone who has, on a serious note, done a great job at Silent Gunner. So thank you, Apurv Bhai, for joining us. It's great to have you here. And we are looking forward to talking about anything and everything Arsenal here without the Europa League anthem. Champions League is back, we're back, and really, it's my pleasure to be here. Yeah, you guys are doing a fantastic job. I mean, when I came across you guys' page, and I watch a lot of podcasts related to football, so I watch you guys. I mean, it's a tremendous growth, and the level that you guys have maintained. I mean, it's really remarkable, and it's really great to. It's a great feeling to be here, actually, to be talking to you guys. You guys are doing a Thank you. fantastic job. Just looking forward to आपसे it. मेरे को tremendous growth से what I remember is of course the Arsenal team from previous season to this season. Even though let's be honest, all Arsenal fans will be kind of disappointed with how the last पिछले 2-3 हफ्ते गए हैं, लेकिन अपूर्व भाई, before we deep dive into this podcast episode with you, आपको in general इस Arsenal season के बारे में of course you have more positive emotions than negative ones, है ना? Of course, I mean, if you look at the growth that we have gone from finishing eighth to second Yeah, within 2 seasons. I mean, within 2 seasons. This is the second full season that Arteta has got with us, yeah, and within that season, we have we have we are we were not even targeting, as the as Arteta said, it's just a phase three of our development plan, and to achieve that this level that we are competing with the humongous squad that the city have right now. I mean, with the absolutely, yeah, limited resources in the terms of players that we have right now, that are correct. able to play
in the way that Arteta actually wants to play. Because in the starting, I read one of the interviews of Ben White. I mean, what he's the line that he said that impacted a lot on me uh, throughout the season. That he said that finally we are understanding how Mikel wants us to play. Actually, we Yeah, understood it's very important. what he wants us Correct. to do in the previous season as well. We understood what he wants us to do, how he wants us to play the game, but we weren't able to execute it. But with the incomings of in this summer transfer window, I mean, Lacazette, he used what Jesus is doing right now. I mean, Lacazette Yeah, tried his best to do that, but in the previous he season. wasn't as Correct, correct. effective. He wasn't as effective as Jesus is right now. That's the main Of thing. course. So the summer transfers actually affected us in a very positive way, because Arteta got those players in those positions that how he wanted his team to operate in. As in that way, Zinchenko Hmm. and Jesus was very important. Plus, the very important was the switching of Xhaka. I mean, Right. how Yeah, he adapted Zaka. to the new role. He himself said that I refused him that I cannot do that when Arteta asked him and explained him how he wanted him to play in this new role, and he refused. And Arteta convinced him that you can do it, and adapting to a new role, switching to a new position, a new role within a pre-season, it's a Is remarkable not easy. adaptability. I Absolutely. agree. I mean, Yeah. And we have yeah, seen players like Kieran Tierney go back behind quickly, in the yeah. pecking order just because they were not able to adapt. So करेक्ट एंड यहाँ पे great. अनुकर सर इट्स डेफिनेटली इतने सारे पॉइंट्स जो अपूर्व भाई ने बताया अबाउट अबाउट आर्सेनल इट्स वेरी ट्रू जैसे आप लिवरपूल फैन हो वी ऑल it does not matter कि कौन से प्रीमियर लीग टीम के फैन हो but the Arsenal growth from the previous season to this season and it does not even matter at say even if at the last juncture if Arsenal slips up and does not win the title it मतलब not taking away anything any of the brilliance that Arsenal have played so far in this season right even other team के fans would appreciate it डेफिनेटली मैंने एंड सी आर्सेनल के साथ मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा मेरे एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से रहा है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ बिकॉज अबूर भाई से मतलब दैट इज अनदर वन ऑफ द रीजंस पर बैक व्हेन आई स्टार्ट वाचिंग फुटबॉल दैट वाज इन 2006 तो दो प्लेयर्स होते थे एडुआर्डो डा सिल्वा और इमानुएल एडेबायोर एंड आई टेल yeah यू लाइक मैं जो बोलते ना अब आई थिंक आई एम ओल्ड इनफ टू से अब मेरे जमाने में वाला तो उस जमाने में the way they used to play, the way they used to play, and the way they used to knit passes and score those amazing goals. Like Arsenal have always had a team which has had a lot of class. The goals they score, like जब भी आप किसी भी प्रीमियर लीग सीजन के टॉप 10 गोल्स देखोगे तो टीम गोल्स बहुत दिखेगी आर्सेनल की हमेशा से एंड what the only thing that they have lacked is consistency कि आर्सेनल चलो बहुत ही अच्छी टीम को बहुत अच्छे से हरा लेगी या they will do well but they will fumble against a relatively smaller team with all due respect to it तो वो अभी तक होते हुआ है बट दिस सीजन आर्सेनल हैव शोन कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी से ज्यादा मतलब एक बहुत अब तो एक जोक बन गया था एक पॉइंट तक कि ट्रस्ट द प्रोसेस जो आर्टेटा का कहते हैं पर तो ही और मैं बहुत बार डिस्कस करते हैं जब भी हम मिलते हैं अपूर्व भाई एक डॉक्यूमेंट्री अमेजोन प्राइम वाली ऑल और नथिंग वाली तो उसपे आर्सेनल का डिस्कस किया सीजन तो उसमें ना yeah correct आर्ट हाँ तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई है Arsenal about how Arteta manages about there was this one time although Arsenal ended up losing 4-0 जब उसने स्पीकर पे "You will never walk alone" बजवाया था उसने Arteta ने there was this one time when gave the example of a bulb that Thomas Edison yeah Edison did, Edison created right so all these examples just kind of show that Arteta is a manager who thinks who really thinks हाँ who knows his game and जैसे आपने बात की इस बार समर साइनिंग्स की मैं तो बोलूंगा ये उससे पहले जो समर साइनिंग्स आई है ना अपूर्व भाई रामसडेल वगैरह आई थिंक द इफेक्ट दे आर शोइंग नाउ दैट दे आर they have cemented their place in the team it's on another level and the cohesion which we saw from Arsenal
with all due respect, I think it's a shame they aren't winning the title because अगर injuries नहीं हुई होती ना, I don't see any reason why Arsenal wouldn't have won it. Because True. Gabriel Jesus getting injured at that point of time, I'm sure that would hurt any team season. Because क्या form में था वो बंदा for that matter, and even players like Martinelli getting injured, Saliba I think getting injured was like the biggest factor this season because he has been an absolute जैसे Van Dijk लिवरपूल के लिए he has been that sort of a colossal for them. And what I can say is that with Arteta at the helm, there's nothing Arsenal cannot do if they keep on doing what they have been doing on a consistent basis and provided they can get a few good signings this summer. Absolutely. I mean, I know Arteta is still a young manager. He Hmm. still has a Yeah, lot to learn, and as you said, we are reaping the seeds that we have sown over the past 2 to 3 transfer seasons. windows. Right now, Hmm. over the past 1.5 years in this transfer window, summer transfer window, finally Arteta had 11 players that he can play Hmm. Right. in that he had 11 players that can execute his plan to perfection in And each and every game. Yeah, The thing was we didn't have enough depth to have to make substitutions enough, because in the starting games also in the first half, before the World Cup only, one thing that I understood was we don't have depth. hmm. Depth yeah, in the sense we have great players on the bench. We have great players on the bench. That doesn't matter. But the doesn't matter if you have great if you like in terms of FIFA, if you have 80, 90 rated players on your bench, it doesn't matter if they can't execute the game plan that you want them to play with. So Right. that was the problem. definitely. Having Tierney on the bench, I mean, players like Tierney, I mean, holding has been rock solid. We have Tierney. Tomiyasu. We cannot play with Tomiyasu, players correct. Hmm. if they cannot play in the way that the manager wants to play. That was the problem. Vieira and all, they are tremendously good players. Uh, We, plus the injuries have been so bad this season. So we were very thin on the bench as well. The few good players that we had, they were injured in the forward line. At the time, we didn't have any attacking players to substitute except Enketia uh, and at In KTM. Liverpool. So I that was though although I think matlab, I know his contract is going to be up, but I really like Reece Nelson also as a player. Like Nelson he's is. very very good. Huh? I absolutely adore him. I mean, if Yeah, except the injuries, even in the last game when we lost to Brighton, I wrote in my write up on the after the match that he was the only player on the pitch who looked like giving his all even at the 89th minute of the game when we had Absolutely. the whole even Kivior said that when we conceded the second goal, our heads went down. Not Nelson. I mean, yeah. Nelson was looked like the only player who still had that fire inside him to score a goal or win. Yeah, exactly. And interesting that you guys mention about Nelson because Apurva bhai, I will ask you this also since we are in the topic of Mikel Arteta and how he has been able to manage the team. Players like Nelson are really like the contributions that they make sometimes never comes out into the score sheet. The media never covers it. Articles are never written about it. But because why so many of us love football so much is because each 11 of those players who are, in fact, I'll even say 22, sometimes even the opposition leaves a mark on ourselves, but overall we have been speaking about different kinds of players and Mikel Arteta. About something that I wanted to specifically ask about Arsenal team to Apur bhai was about the rising effect of Martin Odegaard. Hmm. Young kid from Norway, and of course he has been able to ask he has उसको बोला गया है to fill big shoes. And Apurva bhai, from the outside I am not as an invested Arsenal fan like many of your guys would be in your page. What are your first remarks given Martin Odegaard's season throughout? I mean, when he came in as a loanee, Yeah, he made a really big impact. When even
with the he one of the few players in the 11 that looked very comfortable with the Yeah. way Arteta wanted them to play. There were Right. Okay. a few blanks like Lacazette wasn't comfortable. Uh, on the wing, ESR and all, they were not very comfortable in the way that they played. So but he was one of the players. Him, Ramsdale were a few players that actually looked extremely comfortable with the way Arteta wanted them to operate in the field. Like Yeah. True. Odegaard was so good. He was like, I mean, there were rumors like Real Madrid won't want to sell and all. I actually believe that it was done. He came for 6 months. Let's forget about Yeah. him. But sudden, I mean, it was a master stroke of Edu to bring him Yeah. to I do. Arsenal. It was an absolute master stroke of Edu to bring him for such. I mean, 40 million is nothing. 38 millions Yeah. Yeah. for a player like Martin Odegaard. I mean, it was insane buy. It was an insane buy, and he has been so comfortable under Arteta. I mean, his link ups with Saka on the wing have been remarkable. That's what has been happening right now. That's why Hmm. we are seeing him score so many goals. I mean, Yeah. and the plus the thing is he is invested defensively as much as attack.